Hello everyone, and today we are going to discuss Jamia question paper of MPT Entrance Examination 2022 and 23. So सबसे पहला question है the shape of the normal curve is. So the answer is bell shaped. जो normal curve होता है वो bell की shape में होता है इस टाइप से. Okay, next is the method of selecting a desirable portion from a population which describes the characteristic of the whole population is called as method of selecting. मतलब अगर हम किसी बड़ी population में से एक छोटा सा सेम पोर्शन हम निकाल रहे हैं जो कि पूरे population की characteristic को बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं sampling. Sampling is the answer. Okay. And bell shaped, तो सैम्पलिंग बोलते हैं उसको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम? so increased high density lipoproteins is not a metabolic syndrome. Common lung cancer in non-smokers. So common lung cancers in non-smoker है adenocarcinoma. Okay. Which route of drug administration carries the highest risk of adversely affecting vital function? So सबसे मतलब वो कौन सा रूट है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वाइटल फंक्शंस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने का? सो वो है आईवी रूट. Which of the following drugs is most likely to be absorbed from the stomach? स्टमक से कौन सी ऐसी ड्रग है जो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगी? डाइक्लोफिनेक सोडियम. क्वेश्चन नंबर 7. द हार्मोन ऑक्सीटॉसिन is secreted by ऑक्सीटोसिन is secreted by posterior pituitary gland क्योंकि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, एस्ट्रोजन ओवरी से, एड्रेनलिन एड्रेनल्स से. सो ऑक्सीटोसिन secreted by posterior pituitary gland. The immunoglobulin that crosses the placenta barrier is IgG. Always remember IgG can cross the placental barrier. Question 9. Which of the following is not an infectious disease? Scurvy is not an infectious disease as it is caused by by the deficiency of vitamin C. Okay. The primary characteristic of children with dyslexia includes inability to read fluently. dyslexia के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं. Residual volume is amount of air left in the lungs after maximum expiration. मतलब मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट है एयर का लंग्स में जो बचता है उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम. एयरवे क्लियरेंस टेक्निक कफिंग भी होती है, पोस्टरल ड्रेनेज भी होती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती है. सो ऑल ऑफ द अबव. विच वॉल्व prevent the flow of blood from the ventricles back into atria during systole? Systole means contraction के दौरान जब ब्लड एट्री से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वो कौन सी वॉल्व है जो वेंट्रिकल से वापस ब्लड का फ्लो बैकवर्ड टू एट्रियम नहीं आने देती? सो वो है राइट साइड है ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लेफ्ट साइड है माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व. सो बोथ ए एंड बी. आंसर इज सी. Which of the following muscle fibers is the most beneficial for a marathon runner? तो जो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग रनर्स जो होते हैं या मैराथन वाले होते हैं, मतलब इस टाइप के मसल फाइबर्स जो बहुत लंबे समय तक
वर्क कर सकते हैं, सो टाइप 1 के होते हैं। ठीक है। और टाइप सेकंड का दो होते हैं, ए एंड बी। जो बी होता है ना, सेकंड का बी, वो मतलब एकदम पावरफुल होते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उनमें इतनी एनर्जी, बहुत पावर होती है उन मसल्स में। जैसे जो बॉडी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं टाइप सेकंड बी। और मैराथन वाले या रनिंग वाले स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं टाइप 1 फाइबर्स, मसल फाइबर्स। ओके। Next is, which of the following is the definition of power? So definition of power is force into velocity. The mean arterial pressure is defined as average blood pressure throughout the cardiac cycle. पूरे कार्डियक साइकिल के दौरान जितना भी एवरेज ब्लड प्रेशर आ रहा है वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोकिनेटिक मसल एक्शन? आइसोकाइनेटिक मीन्स कि वेलोसिटी सेम रहेगी। आइसो इज सेम, काइनेटिक इज वेलोसिटी और स्पीड। ओके। So a movement during which the velocity is held constant. The primary inspiratory muscle is external intercostals. This is very easy. Inspiratory muscle में अगर primary बतानी है तो external intercostals, अगर expiratory muscle से बतानी है तो internal intercostals. Which of the following is the body's major heat loss mechanism? बॉडी की हीट लॉस कैसे होती है? इवेपोरेशन से होती है एक्सरसाइज के दौरान। ओके। ओके। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स इज 0.06 टू 0.1 सेकेंड। ये याद करना पड़ेगा। The most common complication after ACL reconstruction is loss of extension is more common than loss of flexion. एक्सटेंशन का ज़्यादा लॉस होता है, एक्सटेंशन का लॉस होना, नी एक्सटेंशन का लॉस होना ज़्यादा कॉमन होता है फ्लेक्शन के लॉस होने से। ओके। डोम्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय swollen मसल्स, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, मसल वीकनेस। इन सब से ही हम डोम्स को, डिलेड ऑनसेट मसल सोनस को हम करेक्टराइज कर सकते हैं। इन द एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। एंटीजन ए और बी दोनों ही नहीं होता है ओ में, सो उसे ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, एक इंडिविजुअल में अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? सो इट इज 70 मिलीलीटर केजी बॉडी वेट। Normal blood pH is 7.35 to 7.45. Plasma represent dash percent of the total blood volume. 60%. Most of the fat digestion occurs in the small intestine. Respiratory center is located in medulla oblongata. Which of the following is not a neurotransmitter? Tyrosine. Which nervous system controls skeletal muscle? Somatic system controls the skeletal muscle. Myositis ossificans is most common around the elbow joint. Earlier signs of Wolfman's ischemic contracture is pain. Vector is a physical force that has both magnitude and direction. Second order lever is जिसमें वेट मिडिल में हो एंड फुलक्रम एंड एफर्ट जो है वो दूसरे कोने में सिचुएटेड हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर स्टैंड फेस मसल्स? अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होता तो सिर्फ क्वाड्रिसेप्स आंसर होना था। अब ऑल ऑफ द अबव है तो इसमें हैमस्ट्रिंग्स भी आती है, इसमें टिबियस एंटीरियर भी आती है स्टैंड फेस में, सो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द which type of contraction occurs when the force of the muscle is less than the resistance? मसल का फोर्स जब कम है रेसिस्टेंस से तो इसेंट्रिक एक्सरसाइज होती है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, सॉरी। Okay, the glenohumeral joint capsule is slack anteriorly and inferiorly. Which movement of the shoulder gets restricted when supraspinatus is torn? Abduction. Supraspinatus is responsible for the initial 15 degree of flexion. Recurrent dislocation is least common in knee. All of the following are a feature of CTEV shoe that is a modification of a normal shoe except presence of a metatarsal bar.
ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर अ फीचर ऑफ सीटीवी, इनमें से सारे जो हैं सीटीवी के फीचर हैं, एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ मेटाटार्सल बार. ओके, नेक्स्ट इज फ्रैंकल्स एक्सरसाइज. किस लिए यूज करते हैं हम? सेरिब्रल अटैक्स या बैलेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए. हार्ट रेट इंक्रीजेज इन अ लीनियर फैशन विद एन एनर्जी एक्सपेंडिचर लीनियर restraint. Okay. Okay, next is cardiorespiratory endurance is also known as aerobic fitness. A nutritional product that improves fitness and performance is called ergogenic aid. What is the recommended exercise frequency for type 1 diabetic? 5 days per week. Optimal body fat for athlete is body fat जो कि एथलीट के लिए सही है कितना परसेंट फैट? 6 to 13% of the body fat. Individuals increases the risk of developing coronary artery disease if they carry, अगर उनके abdominal एरिया पे बहुत वेट है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बट विच इज़ नॉट अ सुपरफिशियल सेंसेशन, वाइब्रेशन इज नॉट अ सुपरफिशियल सेंसेशन, पेन, टच, टेम्परेचर, दीज ऑल आर. डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन swallowing, मतलब निकलने में दिक्कत, dysphagia. The Berg balance scale measures static and dynamic balance both. A muscle which flexes both hip and knee is known as sartorius. Abnormal lateral curvature of the vertical column is scoliosis. Okay. Next, damage to which nerve results in inability to oppose thumb to little finger. Means कि थंब को लिटिल फिंगर से ओपोज करने में डिफिकल्टी आना, ये किस नर्व की डैमेज की वजह से हो रहा है? मीडियल नर्व विच इज नॉट द कंटेंट ऑफ कार्पल टनल. अल्ना नर्व, मीडियल नर्व भी है, पल्स लॉन्गस भी है, फैक्सिटिशियम सुपरफिशियलिस भी है. बोन that take part in the lateral longitudinal arch is calcaneus and cuboid. Muscles inserted into the greater trochanter of femur except gluteus maximus नहीं करती है insert greater trochanter में. Okay. Muscles not supplied by femoral nerve is iliacus. Iliacus is not supplied by the femoral nerve. Muscles produce elevation of scapula is all of the above. Trapezius by considering contraction and major minor by the eccentric contraction. Which muscles is not produce medial rotation of humerus? Pectoralis minor, because it does not attaches to the humerus, so it is unable to medially rotate the humerus, right? जब वहाँ पे वो अटैच या इंसर्ट ही नहीं कर रही तो वहाँ पे कोई फंक्शन का उसका रोल ही नहीं बनता ना. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व आर देयर? C8. C7 तक वर्टिब्राज होती हैं बट सर्वाइकल नर्व के पेयर्स हैं 8 होते हैं. Anterior pelvic tilt is produced by hip flexors and lumbar extensors. A lordoric posture is characterized by increase in lumbosacral angle, an increase in lumbar lordosis, an increase in the anterior pelvic tilt, all of the above. Where there is a permanent deformation with load of low magnitude and long duration in the elastic range, it is known as creep. CM tightness is characterized by neck side flexion towards the affected side with rotation to the opposite. नेक का side flexion affected side की तरफ and rotation होगा opposite side की तरफ, तो SCM tightness इस तरह से होती है. Trendelenburg sign is said to be positive when जब आप affected साइड पे स्टैंड करो एंड आपका सही वाला पार्ट pelvis जो है वो ड्रॉप कर जाए तो उसे ट्रेडलिनबर्ग साइन कहेंगे, पॉजिटिव है. एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन, plantar flexion takes place in sagittal plane. Okay, so
Um, this is, everyone knows, this is coronal and this is sagittal axis. This is coronal axis and this is sagittal axis. Okay, and if the axis is coronal, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे पीछे जाएगा ना, एंकल डोर्सल फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन में पैर आगे पीछे जाएगा, तो इसकी एक्सिस होगी कोरोनल एक्सिस एंड इसका प्लेन होगा सजाइटल प्लेन, कोरोनल एक्सिस. ओके ओके. Next is 67. Which scale is used to assess level of consciousness? We all know that GCS scale is the best Glasgow Coma scale. Whole relaxed contraction is the part of PNF stretching. Stability is improved by lowering the center of gravity, increasing the base of support, increase करके center of gravity lower करके, और center of mass को base of support में fall करवा के. All of the above. Valsalva maneuver is expiratory effort against the closed glottis के against हम expiratory effort डाल रहे हैं. Cold is used in the management of acute trauma because, क्योंकि वो एरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, उसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है ब्लीडिंग. आफ्टर कोल्ड एप्लीकेशन ऑफ लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम के एप्लीकेशन में मसल प्रोड्यूस कर सकती है मोर फोर्स देन इट इज इन नॉन कूल्ड स्टेट. ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है बेसिकली इन कंपैरिजन टू नॉन कूल्ड स्टेट. नेक्स्ट इज, to provide a therapeutic effect, tissue temperature should be elevated to 40 degree to 45 degree Celsius. Depth of US ultrasound penetration is dependent on frequency. US की frequency पे depend करती है. When exercising in water, an accurate reflection of cardiovascular stress हम किससे measure कर पाएंगे? Monitoring perceived exertion is preferred rather than monitoring heart rate. हम ये प्रेफर करेंगे कि उनका exertion हम मॉनिटर कर सकें rather than monitoring heart rate. Amount of laser light energy absorbed by biological tissues depends on the wavelength of the light. उसकी wavelength पे depend करता है कि कितनी absorb हुई है biological tissues से. Capacitive diathermy will cause greater heating in skin and subcutaneous fat tissue than muscle. कैपेसिटिव डायथर्मी जो है स्किन को और सबक्यूटेनियस फैट को ज़्यादा हीट दे देगी मसल्स से. हेल्दी इनोवेटेड टिश्यू शुड हैव अ क्रोनेक्सी. इनोवेटेड टिश्यू का जो क्रोनेक्सी होता है वो होता है लेस देन 1 मिलीसेकेंड. माइक्रो करंट विद अ पीक एम्पलीट्यूड लेस देन 1 मिली एम्पियर. माइक्रो करंट लेस देन 1 मिली एम्पियर. ओके. Next is the smallest dose of ultraviolet light that produces an erythema that appears within 1 to 6 hours and fades without a trace within 24 hours. That is minimal erythemal dose. Erythema is redness. So वो minimal ultraviolet की डोज जो कि erythema प्रोड्यूस कर दे 1 to 6 आवर्स में और 24 आवर्स के अंदर अंदर फेड भी हो जाए, दैट इज मिनिमल इरिथमल डोज. विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मॉन्ट्रियल में है. द रिस्क फॉर शिन स्प्लिंट इंजरी इज मोर इफ द फीट इज फ्लैट फीट. अगर फ्लैट फीट होंगे तो शिन स्प्लिंट इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. हाउ टू मेजर लेग लेंथ? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से के टिप्स से मिडिल मेलोलस तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नियर टू विच वर्टिब्रा? सेकंड sacral vertebra is 2. Flexor muscles of the shoulder except, फ्लेक्सर मसल्स हैं शोल्डर की एक्सेप्ट टीरीज,
मेजर, ये भी फ्लेक्शन करता है, ये भी फ्लेक्शन, ये भी फ्लेक्शन में हेल्प करता है, ऐसे ही मसल है। लेकिन जो टीरीज मेजर है, इट इज अ medial rotator, medial rotator of shoulder. न्यूरोटोमासिस है थर्ड डिग्री इंजरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमासिस, न्यूरोटोमासिस। ओके, cubitus is increasing angle, and cubitus is related to the elbow or a carrying angle. Exaggeration of carrying angle. ओके, तो कैरिंग एंगल का बढ़ना होता है क्यूबिटस वेल्गस, अगर वेरस होता तो रिडक्शन इन द कैरिंग एंगल। इन्फ्लेमेशन आर्थोप्लास्टी, इन्फ्लेमेटरी आर्थोप्लास्टी, आर्थ्रोपैथी, इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी एक्सेप्ट osteoarthritis. This is inflammatory, this is inflammatory, this is inflammatory, but this is degenerative. Okay, common deformities is in rheumatoid arthritis, except common deformities है rheumatoid arthritis में, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सारी जो है वो rheumatoid arthritis की common deformities है। तो rheumatoid arthritis में ulnar disc भी होता है, button deformity भी होती है, swannick deformity भी होती है, बट claw hand नहीं होता है। ओके, ड्यूरपिट्रॉन्स कॉन्ट्रैक्चरस, पाम फेशिया की थिकनिंग भी होती है इसमें, बेस ऑफ लिटिल फिंगर भी इन्वॉल्व होता है। सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम involves present, it is present in the long distance runner, downhill running, excessive stride lengths, all of the above. Pain sensation is carried by A delta fibers and C fibers. A delta and C fibers. Dysgeucokinesia refers to which of the following? It is inability to perform rapid alternating movements with the hands. Hands से alternate movements perform ना कर पाना. Of palsy is due to the loss of the lateral rotators of the shoulders, arm flexors, and hand extensor muscles. Multiple sclerosis affects brain, spinal cord, and optic nerves. Which PNF technique is recommended for Parkinson rhythmic initiation? क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट्स को अपने चलने को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए rhythmic initiation सिखाएंगे। Which SCI patient among the following will not have an effective cuff? Effective cuff किसका नहीं होगा? Lesion below T6 के नीचे lesion वाले को नहीं होगा। Condition that affects ability to communicate is aphasia. Aphthous deformity is due to the median nerve. Glasgow comma score 7 in head injury almost always carry a bad prognosis, क्योंकि टोटल स्कोर होता है 15, 13 से 15 इज वेरी गुड स्कोर, मतलब ठीक है, वो पर्सन ठीक हो जाएगा। ओके, एंड 13 to 10 इज नॉट सो गुड स्कोर, एंड 10 to 7 is very poor, bad prognosis, मतलब difficulty.